me in the nightwear. But You're a today big you are fan wearing of my me in the favorite color. night. Dipti, today you are wearing my favorite color, yellow and Okay. grey. Oh, wow. So this is yellow and gray, and this is an Yes. outfit that I picked up from Goa, and I had shared with you the experience that I lost it. I left this Oh, yeah. package somewhere. I तो I But मुझको left the that's उसका the package. फोटो most, भेजना. it's a Okay. beautiful color. Yes. It's my favorite. Okay. I will. This is from Cotton's Village. So which is in Pune and couple of places, Bombay, Pune, and Goa. Okay, And so cotton we world is are different. streaming live Cotton and world is different. sorry. Cotton world is different. Cotton World is different. That's in Okay. Jaipur. This is Cotton's Village. Okay. It is owned by some Khuranas who are actually Pune residents but belong to the north. And they have beautiful collections. So I have a lot of outfits from there. And from Bougainvillea, Pune. Anyone who lives in Pune, Bougainvillea also has an Instagram. This thing they also take online orders. So not like promoting them, but just telling that people who love to wear cotton and very indigenous traditional outfits, Bougainvillea in Pune and Cotton's Village has got some amazing collection. There's also like that only. Okay, so let's, without wasting any time, firstly, very formally welcome all of you. Thank you and for joining in on the YouTube and on the Zoom family. It is always good to see you any time other than the morning time because we're so used to that 6 to 7 slot where half of us are like sleepy, drowsy maybe, and not too many cameras on. But then now at 11 o'clock in the morning, it is like a day, nice sunny day here in Delhi and beautiful weather, breezy. So very happy to be in front of all of you. And today I had to give my session a miss because I had to go out for some very important work. But then Priya ka maine session suna. She was so wonderful. And she's actually instilled and, like ingrained money practices in our heads. And so many times she reiterated that those 3 points Insta reel pe jo humne dala tha about the money blockages और उसको कैसे हटाना है and how to increase abundance, prosperity and money flow into our life. So please follow that and do this practice. And, so it was really, so I have heard her 1 hour of session. So I think वो 13-14 minute का अभी भी बचा हुआ है जो मैं ये session करके सुनूंगी. So it was lovely, Priya. Thank you for taking a brilliant session. It was indeed inspiring. Thank you so much, ma'am. Thank you Yes. so much. Well, Everything coming from you, ma'am. it Everything. was really wonderful. So yeah, let's get started. Who's asking the questions? Yes, ma'am, me. Hmm. So thank you, everyone. Thank you for joining us for Q&A, and thank you, Dipti ma'am, for giving us your precious time. Thank you so much. So I'll begin with the first question. I'm a student, but I feel I forget everything I study. I want to remember everything I study. What do I do? Okay, so there are certain wisdom steps also that I'd like to give to you as a student. Firstly, that instead of studying too much at night when your brain is already exhausted and being on caffeine to be able to wake up so that you can study more, this is what the students do. So as a doctor, first I'll talk and then I'll talk to you as a disciple of Tony Robbins. Okay, so as a doctor, what I would advise you is that when we caffeinate ourselves in any way, because people have a lot of chai and coffee, just give me a moment. Okay. So first is that when we over caffeinate ourselves, now tea and coffee, both of them have got a lot of caffeine. There's not too much of a difference. Like 1 cup tea would have 125 milligram of caffeine and 1 cup of coffee also has 150. So which means that there is a difference of only 25 milligram caffeine between the tea and the coffee. Okay, so some people keep having chai and coffee in order to wake up till late, or they have soft drinks or something which are over caffeinated already to be able to wake up in the night to study. And in the night, the brain cells are very exhausted. There is a mild inflammation that happens in the brain by the time we are almost about to retire to bed. Okay, because पूरे दिन सुबह के हम जगह पे होते हैं, पूरे दिन ब्रेन अपना अपना काम कर रहा होता है, प्रोसेस कर रहा होता है, एग्जाम का टाइम है, ऑलरेडी स्ट्रेस होता है, और फिर उसके बाद रात तक आते आते हमारे ब्रेन में माइल्ड इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वाटर रिटेंशन भी हो जाती है, और टॉक्सिसिटी लेवल हमारे ब्रेन का बहुत हाई होता है.
ठीक है, मतलब स्ट्रेस हार्मोन्स हमारे ज्यादा हाई होते हैं, वैसे एग्जाम में स्ट्रेस हार्मोन वैसे भी हाई होते हैं, बट इवन अदरवाइज अगर एग्जाम नहीं भी हो, अगर हम लोग भी, आप और मैं जैसे लोग हैं, तो उन लोगों के ब्रेन में भी ऐसा होगा, तो वो रिटेनिंग की जो मेमोरी, रिटेनिंग का जो काम होता है वो 100% एफिशिएंसी के साथ रात को नहीं होता. So I would advise is to first think that early to bed, early to rise. So go to bed by 9:30, 10. Take your proper rest and then wake up at around 4:30 in the morning when the brain will be very fresh. Because जैसे ही आप सोते हो वैसे ही आपका ब्रेन 60% श्रिंक हो जाता है, जो ब्रेन के सेल्स होते हैं. रात में जैसे ही रात होती है वो ब्रेन के सेल्स 100% श्रिंक होते हैं, और 60%, आई एम सो सॉरी, 60% श्रिंक हो जाते हैं. और अब उनके बीच में स्पेसेस क्रिएट हो जाएगा ना, बिकॉज वो सारे ब्रेन सेल्स इतने सारे एक दूसरे से चिपके हुए थे, अब वो श्रिंक हो रहे हैं सारे, तो ब्रेन के बीच में स्पेस हो जाता है. तो अब ब्रेन वेंट्रिकल से क्लेंजिंग एजेंट निकलता है जिसको हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं. साइंस की क्लास नहीं है, लेकिन जितना आप समझ सकते हो उतना आप समझ लो, बिकॉज आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं साइंस के भी. सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ब्रेन वेंट्रिकल से निकलता है, ये हार्ट वाला वेंट्रिकल नहीं है, ब्रेन का वेंट्रिकल है. वहां से वो निकल के आपके ब्रेन सेल्स को हेल्दी, रिवाइव और नरिश करता है, उसमें फ्रेश न्यूट्रिएंट्स डालता है, उनसे सारी टॉक्सिसिटी उठाता है, और वो यूरिन के थ्रू हमसे, हमारे बॉडी से निकलते हैं. सुबह को जब हम सो के उठते हैं तो हम पहली बार यूरिन जब जाते हैं तो हमारा वो यूरिन वार्म एंड थोड़ा ज्यादा टॉक्सिक होता है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द डे. तो वो ब्रेन की सफाई बहुत जोर शोर से इट हैपेंस इन द नाइट. सो दिस इज द रीजन आई वुड ऑलवेज एडवाइस all the students when they're trying to memorize something to be able to wake up in the morning and then try to retain the things that you are learning, because जो स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई करते हैं वो सिर्फ उस दौरान की नहीं होती है. यू हैव टू रिमेम्बर दैट थ्रू आउट. अब मैं जो आपको ये बता रही हूँ मैंने तो अपने कॉलेज में पढ़ा था ना, तो मतलब जो भी ब्रेन का स्ट्रक्चर, किस तरह से ब्रेन काम करता है, विच वॉज आई डोंट नो एजेस अगो, बट आई रिमेम्बर इट टुडे, नो, बिकॉज मेरी सारी पढ़ाई सुबह 4 बजे के बाद से होती थी, तो मैं कुछ भी जो मैंने पढ़ा है अपने कॉलेज में आई हैव नॉट फॉरगॉटन. And then you keep using that saved information also, like brain में saved information है, you have to keep using it also. So you have to keep telling yourself that, oh, my brain really needs to flush out the toxins and become revived in the night. Okay, that is according to Dr. Deepti Verma. Now the second perspective, according to the life sciences and according to the law of attraction, is that this itself must be a dominant blockage in your retaining the memory. इन द सेंस दैट अगर आपने जिस तरह से ये पूछा है कि मैं कुछ भी पढ़ती हूँ तो मुझे कभी भी याद नहीं रहता है, तो ये सब अगर ये डोमिनेंट थॉट आपका रनिंग कर रहा है ओवर एंड ओवर अगेन, और आप उसी वाइब्रेशन पे ट्यून्ड हो दैट कॉन्स्टेंटली आपको नहीं याद रह रहा है, ओ गॉड मैं भूल गई, ओ गॉड मैं भूल गई, तो ये आपकी रियलिटी बन गई है. बिकॉज ये पिक्चर आपके दिमाग में चल रही है पूरे टाइम कि मैं कुछ भी याद करती हूँ मुझे याद ही नहीं रहता और फिर मैं भूल जाती हूँ. तो इसके कारण हो सकता है दैट वट एवर यू लर्निंग यू आर नॉट एबल टू रिटेन एज अ मेमोरी. सो इसका लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से आपको अपना सेल्फ टॉक या ऑटो सजेशन चेंज करना पड़ेगा. एंड नाउ यू हैव टू कीप टेलिंग योरसेल्फ दैट व्हाटएवर आई रीड एंड स्टडी ऑलवेज स्टेज इन माय माइंड एंड आई लव इट. Okay, that is the only sentence you have to write, talk, think, whatever it is in your mind, out loud, whatever it is. Okay, and the third thing is please do gratitude for the 5 elements on a daily basis, because your brain is made up of all 5. Okay, so when you do the gratitude for the 5 elements, so there is a certain temperature in the head. इसीलिए हमने देखा है ना, कभी भी हमको टेम्परेचर चेक करना होता है तो हम अपने माथे का करते हैं from forehead. ओके, बिकॉज वो सिग्निफाई, कभी भी अगर सिर गर्म होता है, बॉडी ठंडी होती है तो उसका मतलब अलग होता है. तो हम कभी भी जब पेशेंट्स देखते हैं तो हम उनका सिर छू के और फिर उनका हाथ छू के हमको पता लग जाता है कि डिफरेंस इन टेम्परेचर जो होता है. सो दैट वे फायर एलिमेंट है, ब्रेन सेल्स आर 85% ऑफ 80 to 85% इज ओनली वाटर. सो वाटर एलिमेंट इज देयर, इट इज मेड अप ऑफ द अर्थ एलिमेंट ऑब्वियसली, बिकॉज सारे इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल्स, कैल्शियम से, इलेक्ट्रोलाइट से ही ब्रेन चलता है हमारा. एंड स्पेस एलिमेंट है, स्पेस एलिमेंट बहुत वर्क करता है ब्रेन में. सो एंड एयर एलिमेंट है ना. सो इसलिए 5 एलिमेंट्स का आप रोज ब्लेसिंग्स करो, रोज ग्रेटिट्यूड करो, आप देखना आपका माइंड कैसे पहुंचेगा एंड यू विल बी द जीनियस. या so there is an affirmation I do. Like now that we are connected, let me just tell, this is for all of you. मैंने आपको बताया था कि मैं 21 affirmations रोज करती हूँ, जो मैं रोज फिर 5 बार बोलती भी हूँ. अभी तो मुझे सीक्वेंस भी याद हो गया है. So which is I'm genius, witty, intelligent and always flowing with creative ideas. This is an affirmation that I do. So we're also streaming it live so you can hear it again, because अभी तो wrap up करने, मतलब I want to take as many questions as possible in this short span of 1 hour.
सो दिस इज द रीजन, लाइक मैं धीरे धीरे आपको लिखवा नहीं रही हूँ, लेकिन आप इन सेशंस को दोबारा यूट्यूब पे हम स्ट्रीम कर रहे हैं, तो आप दोबारा से सुन लेना. एंड सो दिस इज समथिंग, आई एम जीनियस, वेरी इंटेलिजेंट एंड ऑलवेज फ्लोइंग विद क्रिएटिव आइडियाज. And anyone in my office, you ask about my creativity, I'm always coming up with something new, always talking on a new topic, always explaining things in a new way. Even if it is a magic book sessions, I try not repeat what I've told you in the last session. There's always something new that I discover, the insights that I get, and it's always fresh and new. So I'm genius, very intelligent, and always flowing with creative ideas. That is also something that all of you can do. I have an amazing memory, like elephant's memory जिसको बोलते हैं. मुझे ये भी याद है कि जब मैं कॉलेज में थी तो मैंने बायोकेमिस्ट्री वाले एग्जाम के दिन कौन सा सलवार कमीज पहना था. तो मेरी वैसी मेमोरी है. ठीक है. So but then I still do it. No. So all of you also should do this. Yeah. Next question, please. Yeah. The next question is, ma'am, क्या हम भी VLCC join कर सकते हैं? How? Are you serious? Like whosoever's asked it, when I sit in front of you, I don't represent a certain organization. If you want to join VLCC, I mean, we don't use each other's contacts to boost ourselves. Okay. That is one thing which is very, very wrong in us. That means that हम contacts को use करने की कोशिश कर रहे हैं. This is a limiting belief. इसकी वजह से हम कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे. अगर आपको कोई कोर्स करना है सपोज VLCC से, प्लीज गो ऑन www.vlccschoolofbeauty.com और vlccinstitute.com और वहां पे जाके आप देखिए कौन कौन से कोर्सेज है, क्या है. आपको जो कोर्स करना है आप वहां से पढ़ाई कर सकते हैं. Yes, it is amazing. It is world's best in nutrition courses. We have 16 of them. They are really good. But I'm not the person you should be coming to. If at all, अगर आपको करना है, आपने मालूम कर लिया, आपने ज्वाइन कर लिया, वहां पे जाके आप बोल सकते हो that I know Deepti ma'am, so that whatever discount or anything that I could actually offer from my side, I will definitely try and do it. Okay, but आप फर्स्ट स्टेप ही मेरे थ्रू ले रहे हो, इसका मतलब है that आपको अपने आप पे भरोसा नहीं है और आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास ये सिग्नल जा रहा है that you don't trust the process of the power of your subconscious mind. Okay, and using others contacts, no, you have the universal forces that you can draw all the energy and resources from. जब यूनिवर्स आपका ट्रैवल एजेंट हो सकता है, यूनिवर्स आपका गाइड हो सकता है, यूनिवर्स आपका फाइनेंसर हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है ना. तो that way, so just be a little this thing wiser and not approach me directly. I don't represent a company when I'm taking on the platform of Magics and Miracles. All of us are equal. All of us are same, although I am at a very senior position and I can definitely be of help at any point of time. Eventually जब आप join करोगे VLCC में तो मेरी ही लिखी हुई किताबें आप पढ़ोगे. और जब आप अगर VLCC वेलनेस सेंटर में जाते हो तो वहां पे जाके आप बोल देना कि आप डॉक्टर दीप्ति वर्मा को जानते हो, अगर कुछ हो सकता है पॉसिबिलिटी डिस्काउंट का. वैसे तो उनको मुझसे बात करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर करनी पड़े तो कोई बात नहीं. ठीक है, बट प्लीज इस चीज के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, डू नॉट यूज मी for any kind of a thing. I am not an information bureau about my company, and if I was taking a session on behalf of my organization VLCC Healthcare Limited Global, I would have definitely given you information here, but this is on behalf of Magics and Miracles, where we want to empower you to start taking your own decisions and to be number one in your field wherever you are. Okay, and instead of looking for discounts, I would still say that like what I always tell you, that increase the capacity rather than limiting the amount of things. Like कि मैं 1000 रुपए की जगह में 500 रुपए की चीज खरीद लेती हूँ, तो वो लिमिटिंग बिलीफ होता है. इंस्टेड आप 1000 रुपए कमाने के सक्षम हो जाओ कि आप बहुत आराम से इतना स्पेंड कर पाओ. तो इस तरह से हम करते हैं. ठीक है, बट ठीक है, अगर मनी का चैलेंज है तो आप प्लीज एक बार वहां पहुंच गए, कौन सा कोर्स है, क्या है, वहां पे आपको हमारी टीम ने बता दिया, अब आपने डिसाइड कर लिया है. अब अगर पैसे के लिए अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप प्लीज वहां पे डायरेक्टली बोल सकते हैं दैट डोंट से आई एम अ रेफरल, से दैट आई नो हर वेरी क्लोजली, अगर कुछ और डिस्काउंट हो सकता है, ये आप बोल सकते हो. हाँ जी, नेक्स्ट.
पर मुझे इन सब चीजों के लिए प्लीज आप वो ना करें मैसेज और फोन। वैसे भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस भी पूछना होता है, आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है उसके लिए। दे आर नॉट रैंडमली फ्री के नहीं बिकते हैं आंसर्स इस तरह से। जितना देना होता है, मैं ऑलरेडी फर्स्ट 1 आवर 6 to 7 में आई गिव टू एवरी क्वेश्चन वी आंसर। जब भी क्वेश्चन बहुत हो जाते हैं तो प्रिया वैसे ही बोलती हैं कि हम Q&A कर लेते हैं, बिकॉज ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसके अलावा सब कुछ पेड है। हाँ जी, नो क्वेश्चंस अबाउट मैजिक्स एंड मिरेकल मैनिफेस्टेशंस practices, ho'oponopono, customized, free of cost are given from anyone, whether it is Priya, whether it is me. Okay, it is on a payment basis, and it is, you have to book your slot with us. We are not available 24/7. My work profile is different, and I really request all you to respect that. Okay, you can say that I want to take a personal consultation from you. Can we fix a time, and when can I connect? Okay, then whatever available time I have, I will definitely give you whatever first available time I have. That is how it works. Okay, it's not that I'm being thrown by of questions, by you guys constantly on my WhatsApp. I don't even manage to read it. I open my WhatsApp maybe to answer some specific thing, and because I'm an authentic and a real person, तो मैंने वो भी नहीं हटाया हुआ है कि लास्ट सीन कब था, ब्लू टेक। कई लोग वो है ना, क्योंकि डॉक्टर जो डिस्पेंसा बहुत अगेंस्ट इन सब चीजों के, मेरे मेंटोर भी बहुत अगेंस्ट है इन सब चीजों के, कि व्हाई डू वांट टू हाइड फ्रॉम पीपल कि आपका लास्ट सीन कब था। अगर आप रात में 2 बजे जगे हो किसी रीजन से और आपको व्हाट्सएप पे कनेक्ट करना पड़ा, तो आप लोगों को क्यों नहीं दिखाना चाहते हो कि आप 2 बजे जगे हो, है ना? अगर अगर आपने किसी का मैसेज अनरेड किया हुआ है, अभी तक आप नहीं पढ़ पाए हो, ब्लू टिक नहीं आया है, तो क्योंकि कई बार ये होता है आपके पास 2 मिनट है, आपको पता है कि वो ऑफिस का एक अप्रूवल वाला कोई मैसेज है जिसमें ये लिखा हुआ है, और किसी का है दैट मैम आई विल कम एंड मीट यू एट 2 o'clock इंस्टेड ऑफ 11, तो वो मुझे पढ़ के ओके करना पड़ता है, क्योंकि वो ऑफिशियल रीजन से होता है ना। कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें से होता है इस तरह। जैसे प्रिया मुझे मैसेज करती है तो मैं प्रायोरिटी पे पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज होगा, वो तभी करती हैं। सो ऑब्वियसली इस तरह से जब होता है तो हम कर लेते हैं। बट अगर मैं नहीं पढ़ पाई हूँ किसी का, अगर आपने ब्लू टिक नहीं देखा है लेकिन डबल टिक आ गया है, इसका मतलब डिलीवर्ड है, लेकिन मैं नहीं पढ़ पाई हूँ, तो मैं जेन्युइनली नहीं पढ़ पाई हूँ, कोई मैं डेलिबरेटली तो नहीं करूंगी ना। आई एम इन दिस फील्ड ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड manifestation, and I believe in the power of the universe, so I will never fake myself. I will never try to avoid things. I never brush anything under the carpet. I always face things head on. That's very, very clear. So you will be able to see मेरा लास्ट सीन कब है, मैं कितनी बजे, मेरा ये यहाँ पे कब कितनी बजे लास्ट वो था, मेरे ब्लू टिक्स, मेरे डबल टिक्स, मेरा ये वो, बिकॉज डॉक्टर जो डिस्पेंजा और टोनी रॉबिन्स दोनों ने ये सिखाया है दैट डोंट हैव द डिफरेंस बिटवीन हु यू आर एंड हु यू वांट द वर्ल्ड टू सी। अगर कहते हैं कि जिंदगी की सारी परेशानियों का रीजन यही होता है कि आप क्या हो, आप क्या कर रहे हो, और लोगों को आप कैसे दिखाना चाहते हो कि आप कैसे हैं। कहते हैं अगर ये गैप को आप ब्रिज कर दोगे ना, कम कर दोगे, तो आपकी जिंदगी में परेशानियां रहेंगी ही नहीं, और आप बहुत बड़े मैनिफेस्टर हो जाओगे, बिकॉज आप रियल पर्सन हो और ऑथेंटिक हो। ठीक है, तो इसलिए और इसीलिए मैंने आपके मैसेजेस में भी देखे होंगे, बट जेन्युइनली मैंने पढ़े नहीं है। बट मैं आपको ये बता देती हूँ कि आप प्लीज अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे पूछ लीजिए दैट आई वांट अ पर्सनल कंसल्टेशन, व्हाट टाइम कैन वी कनेक्ट, एंड देन आई विल बी एबल टू टेल यू। सपोज किसी की रिलेशनशिप में इशू हो रहा है, किसी को कोई फाइनेंसेस रिलेटेड इश्यूज है, किसी का करियर नहीं बढ़ रहा है, तो आपको कस्टमाइज ऑप्शंस चाहिए ना। सो दैट इज मी और प्रिया. You have to book your appointment with us. You cannot just throw a question like that with us, because we already do a lot apart from our main work domain, है ना? Work domain हमारे सबका अलग है। मैं तो हेल्थ केयर सेक्टर में काम करती हूँ, और मैं 9:30 से लेकर रात को 8 बजे तक फ्री नहीं होती हूँ। उस बीच अगर मैं कुछ लंच ब्रेक में देख लिया, कभी कुछ देख लिया, तो इस तरह से वो होता है। ठीक है, so that is what. So I would really love if you respect our time and efforts, and we are already putting it a lot in the morning. It's not effort, we are enjoying it though, but हम सब कुछ आपके queries को हल करने की कोशिश करते हैं, अभी कर रहे हैं ना। हाँ जी। Yes, ma'am. The third question is, I want to start my own startup, but I'm not able to take a single step for it. How do I start? Start by putting it in your dream list. Okay, the first thing. So we are going to, today we have done chapter number 9 in the magic book. Just wait for chapter number 13. In the 13th chapter, you have to put it like that. Thank you, thank you, thank you, that I have an amazing business, which is giving me a quarterly sale of dash, dash, dash. That is what you need to write. And then we will tell you how to do it. It is not a big deal. So many of us have started new careers, and
new businesses. So that is how it is. And let's not call it a startup. Let's call it a flourishing business. Okay. So your words do make your world. We know that words make your world. So if you are the owner of a spectacular business, let your subconscious believe that it is a super successful business with very high sales returns. Okay. So that way. So success depends upon your energy. And if you're consistent with the sessions, you would have already started and you would have flourished in that. And once you've started, then we'll tell you the next step. Then you have to write, I'm thriving and flourishing in my business and my sales are increasing by day and night. This is what you will be writing after you've started it. Okay. So we have the ways and means of everything here. So let's stick to the discipline and the consistency in the session. If you're consistent, this question should have come at all. है ना? Because अगर आप नए हो तो आप regularly understand करो पूरा concept. Because इसमें एक paragraph को हम 40 मिनट समझाते हैं क्योंकि वो हमको समझना जरूरी होता है that how it works. So अगर आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि how this the whole process of energy, frequency, and vibration works. So there will be only ups and ups and ups and ups and ups in your life. Okay. And even in the down that it happens, that's like asking you to take a U-turn. There is no other reason why the downs of lives happen or the dark moments of the life happen. They don't look like dark because you understand the whole process by then. Okay. So yeah, this is it for you. Hanji. Thank you, ma'am. The fourth question is, how should I make my autistic but verbal child to excel in life? Shall I write for him or do affirmations? Kindly guide. Yeah, the 5 points I'd mentioned about your child, just pick up all the beautiful things and the traits that your child has. That thank you, universe, that my child is very loving. Thank you, universe, that my child eats a very healthy food. Thank you, universe, that my child is super intelligent. Thank you, universe, that my child is the teacher's favorite and, like really enjoys wherever he is. And thank you, universe, that my child's health is getting better and better and he's physically, mentally, and emotionally super happy and healthy. That is what you need to write every day. Yeah, next. Just a minute, ma'am. Yeah, the next question is how to write affirmations. Clarify about it. Regarding the affirmations, I will be making an Insta post today. So this is only an affirmation. I had made it yesterday, but then usme ekdam se, like my battery conked off and I left it last night. So I will be making it today. I'll make it but then Soumya is going to post it tomorrow because today's video, she already has what she's posting. So every day, Soumya is posting one post. She's giving one post on the Insta. Be regular with it because they are all the topics that you all have asked or topics of concern that will accelerate your life. And तो कल वाले में आप ये affirmations का देख लोगे तो उसमें मैं in detail I'll explain to you. Don't worry. Just wait for another 24 hours. Hanji. This, I think, ma'am, a relative or a friend is writing for a couple. Her husband wants to relocate into Canada. She's reluctant, looking into pros and cons. What can be done? Get her into the Magics and Miracles by Dr. Deepti Verma YouTube. Otherwise, you will not be able to do it. This is not how it is done. You cannot change somebody's destiny when they are in their lowest moments. All you can do is the magic dust of peace and harmony. What from your side you can do is, because maybe there are conflicting kind of energies in her family, because it is a third person. So praying for a third party, all you can do is give them magic dust of peace and harmony and clarity. Okay. Thank you, universe, for giving peace, harmony, and clarity between that husband, wife, or the couple, or whosoever. That is all you can do. And if they really want to transform their life and they really want to go to Canada or whatever, then they come into the sessions and hear it. Okay, this is what I would advise. Ma'am, this is for her only. She's the first person, but she's the only one who's asking for her. But then इसमें लिखा तो ऐसे ही हुआ था ना. Unnati, can you just read that question again? Yes, ma'am. It's written her husband. I rewrote it. उस कारण से I took it as she. She wrote it in another language. That's why I took it as she. Yeah. Okay. Her So only. you can just see if the Person. free will of the husband is there in that. Like, does the husband also want to go? If the husband also wants to go to Canada and together they mutually want to go to Canada, they should straight away go into the dream list and then give a lot of love to Canada or about that country. Google it, go on the YouTube, read about Canada, give it love, खूब अच्छी सी energy दो. And dream list कैसे fulfill करनी है वो हम chapter number 13 से आपको बताते ही हैं.
है ना, जो ड्रीम लिस्ट में जो ये लिखेंगे, थैंक यू दैट वी हैव अ वेरी फ्लरिशिंग करियर इन कनाडा एंड वी आर रियली लविंग द प्लेस एंड ऑल दैट, बट ऑल कनाडा निवासीज वांट टू कम बैक टू इंडिया. हैव यू स्पोकन टू देम? She wants the same thing, ma'am. Her husband wants to relocate there, but she doesn't want to go. She's not she is reluctant to go there. That's what she was asking. That my husband is very desperate to go there, but I do not want to go. तो Okay. फिर कैसे करना है ये ऐसे ऐसे. Oh, well, doesn't matter. Then you can just write amicably. Then some things, when there are conflicting statements, then we need to surrender it to the universe, because सबसे इम्पोर्टेंट पावर ऊपर वाले के हाथ में होती है. उन पे सरेंडर कर दो. थैंक यू. तब आप क्लैरिटी के लिए लिख लो that, you know, ask for clarity. Just before you go to sleep in the night, you can just talk to the universe and say, why do you want? अपना why strong कर लो ना. Why you don't want and why he wants. You know, write that. Why do you don't want? Why does he want? Why does he want to go to Canada? To have a great career, to earn money in Canadian dollars, really, and to live in a very cold country. Well, if y'all are really wanting to, or be with the relatives, I really don't know what is the reason of, you know, like there has to be a very strong reason, because वो reason actually yield करता है result. तो अगर आपका वाई, उनका वाई बहुत स्ट्रांग है कि ये सारी चीजें, तो आप उन वाई पे फोकस करो. That suppose he wants to earn in USDs or Canadian dollars, then you can just write that, you know, there is a specific amount of money maybe that the person wants, or is it to run away from India? Then the dream will not get fulfilled. If you're trying to run away from something, then your desire will not get fulfilled of relocating. So your why has to be very, very powerful. Okay, if the उस why पे focus करो, that your husband wants to build a business or do an international business, then your dream list will be thank you that my husband is thriving and flourishing in his international business that he wants to spread all over the globe, or want to have a global business. Okay, you will see by the law of attraction, this desire will get fulfilled. It is not about Canada, or it is not about, you know, so आपका जो why reason है, जो हमने कल money वाले में भी मैंने बताया था ना बहुत clearly, that suppose if you want 10 lakh rupees every month, then you don't have to try and instruct the universe from where I wanted. You just have to say, thank you, universe, that I'm receiving rupees 10 lakh every month, you know, with ease and joy, doing what I love. So you're not telling the universe that I want money from my business, from my salary, from my YouTube, from my this, from my that, from my that. This is not what you instruct. Universe doesn't like to be told too much. है ना, वो limiting beliefs के कारण हम बताते हैं. इस तरह आप उस वाई पे फोकस करो कि आपके हस्बैंड क्यों कनाडा ही जाना चाहते हैं. 195 कंट्रीज में से उन्होंने वहां ही क्यों चूज किया है. उनको अपने पेरेंट्स के साथ रहना है, उनको वहां पे जाके अपना नया काम शुरू करना है, उनके रिश्तेदार दोस्त वहां पे रहते हैं, उनके साथ उनको हार्मोनाइज होना है, यूनाइट होना है. तो फिर वो आएगा, यू नो, लाइक वो ड्रीम लिस्ट में. तो इस तरह से. सो अभी तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग वाली सिचुएशन है, बट जिसका भी वाई स्ट्रांग होगा वो हो जाएगा. और एवरीथिंग लीव द रेस्ट टू द यूनिवर्स. ओके, उस वाई का आप रीजन लिख के, सो एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस. एंड अगर आपको बहुत ज्यादा, अगर अपने अंदर आपको वो लग रहा है, कॉन्फ्लिक्ट लग रहा है सिचुएशन से, और बहुत बुरा लग रहा है कि वो जाना चाहते हैं और आप नहीं जाना चाहते हो, तो अपनी उस फीलिंग के लिए आप 108 होपोनोपोनो रोज करो. सब ठीक हो जाएगा. अपने आप रास्ते बनेंगे, ट्रिब्यूटरीज बनेंगे, और फिर सब एक नॉर्मल एक रिवर में ज्वाइन करेंगे. सब ठीक हो जाएगा. ठीक है, 108 होपोनोपोनोस करो फॉर योरसेल्फ, दैट आई टेक 100% अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी for the way that I'm feeling, that I don't want to Canada and my husband wants to go, for this feeling, for this conflicting feeling. So I'm really sorry. Please forgive me if I've done anything which is making me feel like this, you know, in conflicting situation. And thank you. I love you for cleaning that energy, that data from my subconscious mind. और उसके बाद आप 108 होपोनोपोनो करो, clarity आपको आ जाएगी. हाँ जी. Yes, ma'am. The next question is, I've been into teaching for 15 years and don't want to enter administration. Feeling stuck and stagnant. Want to switch career but not clear what I really want. How do I get that clarity? So whatever it is, why do you want to switch your career is what is most important again here. Why do you want to switch your career? You want to switch it because you want to grow in your life. Okay, how do you want to grow in life is also a very ambiguous statement. It is not like, so how do you want to grow in your life? You want to earn more money, you want to value add to others and earn more money, then this has to be your goal.
ओके करियर स्विच करना, बट देन यू हैव टू मेक पीस विद वेयर यू आर राइट नाउ. जिस जगह पे आप अभी हो उसमें जब तक आप 200% ब्लेसिंग्स, ग्रेटिट्यूड एंड लव नहीं डालोगे, तब तक आपका आगे का रास्ता सुंदर वाला नहीं खुलेगा. खुल जाएगा, लेकिन यू विल कैरी द कर्मा फ्रॉम हियर एंड द ग्रज फ्रॉम हियर टू योर न्यू जॉब ऑल्सो. Okay, again, that will also get messed up. You have seen people, no, who keep switching jobs, but every job has the same situation. They have to leave, they have to leave, they have to leave because of certain circumstances, because those circumstances will chase you everywhere. Till the time you don't shift that energy from within of the grudge against the position and you're not happy with currently. Okay, so this is something that you will have to, आप अपनी जिंदगी इस वक्त gratitude से भर दो. कि एडमिन की जॉब है, आपको लोगों से बात करने का बहुत अच्छा मौका मिलता है, आप लोगों से कनेक्टेड हो, हर महीने के एंड पे आपके पास सैलरी आती है, वो सारी चीजें आप करो. वो नेगेटिव एरिया चैप्टर नंबर 7 आप पढ़ो दोबारा से ऑफ द मैजिक बुक, जो हमने परसों लिया था. आप उसको बहुत अच्छे से सुनो, ठीक है, आप समझ जाओगे मैं क्या बोल रही हूँ. एंड डू कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड 10 of them, which, and those 10 gratitude will be about your current situation of handling admin and not teaching or whatever. So write those 10 blessings. In the end of it, write thank you, thank you, thank you for the perfect resolution. ओके आपको उस दिन वो कर लेना चाहिए था. अगर इतना बड़ा वो है, इतना बड़ा अगर कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है आपके मन में, इतना वो है, ग्रज है आपको करंट जॉब से, ग्रज आपकी कंटिन्यू होगी. ये ग्रज वाली फीलिंग आपको चेस करेगी. यू गो इनटू 5 मैग्निफिसेंट जॉब्स ऑल्सो, ठीक है, दिस ग्रज फीलिंग विल चेज यू बिकॉज दिस ग्रज इज विद इन. इट इज लाइक इट इज योर बॉडीज फ्रेग्रेंस. You cannot separate that from yourself. If you go to job number 2, you will carry that fragrance with you. If you go to job number 3, again, you will carry that fragrance with you. So you will find situations that will make you grudgy everywhere, like, so इसीलिए आप अपने आप को make peace with where you are right now, because this is the only way your new door is going to open up in your life. And then of course, like आपको while value adding, you want a certain amount of money that has to come to your dream list. Okay? Yeah. Thank you, ma'am. The next question is, I'm into magic practices. Challenge and area of money are increasing day by day. Not able to fulfill basics. Please suggest what I should do. You're not consistent and you're not doing the practices. Magic के साथ से attach होने से क्या होता है? इसमें लिखा हुआ है Rhonda Byrne ने Day 0 में, that to experience the magic of gratitude, you have to practice it. So are you really, आपने लोगों के पैसे hold कर रखे हैं? Do you do that magic money practice every day? Do you do the money magnet practice every day? है ना? So आप chapter number 5 of the magic book and chapter number 9, ये आप दोबारा से पढ़ो, dissolve it in water and drink it. Okay, you really need to understand. And then this is the reason I had made that Insta reel also. Are you really following it? Those 3 things that I told you. So Priya ने आज दोबारा से reiterate किया ना आपको, arigato in, arigato out. अगर उस तरह की practices हैं, अगर मैं होती, मैं आपको एक छोटे से example बता रही हूँ. It was, I think, day before yesterday, yeah. On Thursday, there was something which was bothering me a lot. Okay, like literally मैं काम कर रही थी, the tears used to come to my eyes, and then I would get back to work, and then something happened, then I was feeling very, very low, and this and that constantly. So you know what I did? I just took out my gratitude journal and I did that practice, chapter number 7 wali, about that situation, which was obviously not very good, not very happy. I wrote 10 blessings, and then I wrote thank you for my perfect resolution, and then visualize happiness around that case scenario. And I did 11 times 108 Ho'oponoponos. Can you believe it? I did that. One day did not take for that situation to totally get fizzled out of my system, and it turned around to be one of the biggest boon and benefit. 108 into 11 is what I did that day. So this is how you have to work at it. You're not working at yourself, babe. I mean, you need to step up, tighten your belt, pull up your socks, and get into the running shoes of your life and change your financial situation. And please have a situation where you start receiving at least 5 lakhs every month. That is when you're going to ask me the question next. There is enough data on the YouTube to be able to make you, do that.
So again, what these practices you can do, you can also do the Ho'oponopono practice for the money. Maybe you have discussed money, or maybe आपने किसी के पैसे तो नहीं रोक के रखे हुए, आप पहले उनके जो हमने छोटी छोटी चीजें, टेलर के पैसे हमारे पास रुके हुए होते हैं, आपने कपड़े ऑल्टर कराए, आपने उनको पैसे नहीं दिए, किसी दिन आप सब्जी लेने गए, you were supposed to pay 140 rupees there, you had only 100 rupees note, and you did not pay him 40 rupees. All this will put 40,000 from your life, it will take it away. Okay, so be very very careful about being like returning people's money. अगर आपने किसी भी चीज से कोई भी सर्विसेज ली है, ठीक है, किताब, बुक, पेंसिल, पेन, ज्ञान, उसके अगेंस्ट हर चीज की कीमत होती है। अगर आप उसको होल्ड करके रख रहे हो तो आपके पास पैसे बढ़ेंगे नहीं। दैट्स वेरी वेरी क्लियर। ठीक है, तो आप वो ही करो। और मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आप ओवर स्पेंड करो, बट ऑब्वियसली अगर आपने किसी टेलर से कपड़े ऑल्टर कराए और उसको आपको 60 रुपीज देना था, ऑब्वियसली यू कुड अफोर्ड इट, दिस इज द रीजन यू कुड एक्चुअली, दिस इज द रीजन यू वेंट टू हिम, नो? आप ऑल्टर जब कराने गए तो आपको पता था कि एक बड़े से कुर्ते को आप छोटा करवा रहे हो तो उसका मिनिमम 50-60 रुपीज तो लगेंगे ही, तभी तो आप गए थे, आपको पता होगा ना ये पे करना है। लेकिन हो सकता है आपने 50 दे दिए और 10 रुपए उसके ड्यू पड़े। तो ये छोटी छोटी चीजें भी बहुत मैटर करती है। बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो जो 10 रुपए है ना, वो 10,000 के रूप में आपसे जिंदगी से निकलेंगे। अगर पैसा आ भी गया आपके पास ना तो टिकेगा नहीं, बिकॉज इट इज ऑल माइंड सेट। ओके, तो मैंने तो आपको उल्टा सिखाया है कि 60 देने हैं तो आप 65 दो, 70 दो, है ना? इस तरह से सबकॉन्शियस माइंड को अबंडेंस का मैसेज मिलता है और आपकी जिंदगी में अबंडेंस का पाइप कनेक्ट हो जाता है यूनिवर्स से, and you start drawing on from the sources. So please go back to chapter number 5 and chapter number 9, just repeating, and Ho'oponopono करो आप about 20 minutes, क्योंकि मेजर प्रॉब्लम है ना आपकी 20 minutes। लेकिन अपना माइंडसेट चेंज करो, माइंडसेट चेंज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपका लैक वरी, फियर और एंजाइटी वाला माइंडसेट है। और आई रियली होप दैट आप कंसिस्टेंट हो इसमें। मुझे पता नहीं है, मुझे हमको नाम नहीं पता लगता है कि कौन क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर सुबह आप सोते रह जाते हो, आप सुबह की एनर्जी लो ना हमसे, हम सबकी बहुत हाई एनर्जी होती है, और सरिता जी की गुड मॉर्निंग से ही आपके पास पैसे बरसने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आप सुबह की एनर्जी लो, आप 6 से 7 उठो, अपने ऊपर वर्क करो। अगर हम जहां पे भी जिंदगी में अभी पहुंचे, हम ऐसे ही थोड़ी पहुंचे हैं, हम सब ने वर्क किया है ना? हम सब ने वर्क किया अपने ऊपर बहुत ज्यादा। कोई भी कुछ ऐसे बोलता है ये कैसा है, यू आर सो लकी, यू आर सो, आई हैव क्रिएटेड द लक, वी ऑल क्रिएट आवर लाइफ। जैसे आज इन्होंने बताया था ना, प्रिया ने, कि अगर कौन बोलते थे, प्रिया आपने एग्जाम्पल बताया था कि अगर कोई बॉर्न पुअर होता है तो रिच डैड पुअर डैड में लिखा हुआ है कि बॉर्न पुअर है तो चलो कोई बात नहीं, आपकी किस्मत है कि आप एक गरीब घर में पैदा हुए हो। लेकिन इफ यू आर डाइंग पुअर, दैट मीन्स ये आपकी गलती है। सबके पास कैपेबिलिटी होती है अमीर होने की, बताया ना उन्होंने इतने अच्छे से, आपको समझ नहीं आई बात? आप अच्छे से समझो, आप उसको अप्लाई करो, एंड आई कैन गारंटी, एंड आई एम प्रेइंग एंड विशिंग टू द यूनिवर्स टू गिव यू अबंडेंस एंड फ्री फ्लो ऑफ मनी इन योर लाइफ, जिससे आपके सारे ड्रीम्स एंड डिजायर्स फुलफिल हो जाएं। सुन लिया ऊपर वाले ने। नेक्स्ट। Yes, ma'am. How can I help improve my son's self-esteem and relationship with his father, considering the tension caused by academic comparisons and high expectations? एनी वन ऑफ यू, इफ यू हैव एनी आइडिया ये कितने टाइम से सेशन में हो? ऐसा तो फिर क्वेश्चन ही नहीं आना चाहिए था। मतलब सबके बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म करने लगे हैं इन द कोर्स ऑफ आवर मैजिक बुक, है ना? देयर सो मेनी चिल्ड्रन हु वर नॉट डूइंग वेल अर्लियर। उनमें गलत आदतें थी, स्मोकिंग की, ड्रिंकिंग की, झूठ बोलने की, पैसे चुराने की। बहुत सारे बच्चे हमारे पार्टिसिपेंट्स के ऐसे थे पहले, और वो सब टोटली ट्रांसफॉर्म हो गए by being in this, by the mothers and fathers practicing gratitude and writing 5 points about their children every day. Okay, so मैंने ये 5 points बताए हैं। I think भावना या बिट्टी जी, कोई वो जो मैंने 5 points बताए थे बच्चों के बारे में, can we repost that on the group? We'll just find it and repost that. It's no point repeating that again. 5 points daily you need to write about your child, about your son or a daughter, and about the harmony in the family. It has to be your daily thing, that thank you universe that my family is flowing with love, harmony and understanding. This is what you need to keep repeating. Talk, write 21 times every day. I can guarantee you with that after 66 days you will see a huge difference in your family affairs. Anji. That's it from my side, ma'am. I'll ask Rachna to take over. Thank you so much, ma'am.
Thank you, Unnati, so much for working so hard behind the scene. All this is going to reap humongous benefits in your life. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Yes, Rachna, over to you. Thank you. Yeah. Thank you so much, Unnati. Good evening, good morning, Good ma'am. morning. Good morning, Rachna. I'm sorry, it's yeah. So, ma'am, the next question is, how can I? Okay, this you have asked. How can I overcome health issues and exam stress that have caused me to fail repeatedly despite studying hard? This is not the universe of working hard on anything. Easy does it. This is what we've been listening and studying all this while from Dr. Joseph Murphy in the Power of the Subconscious book. And then again, he's repeated that in the Miracles of Your Mind. That easy does it. Okay. Don't work very hard. Change your mindset. Be very regular with your practices. Expand your mindset and make things happen. Things don't happen. Life doesn't happen to us. Life happens for us. Okay, so make things happen in your life. Now, the practices that you need to do, what is the major issue? Health issue. Yes, ma'am, health issues. Okay. Ma'am, So she when, has been failing in her exams Health. for the 5 times. She failed in her exams, and this thing is causing all lots of health issues in her life. The stress, and okay. that's why Oh, don't worry. Everything is going to fall she's into stuck place. First thing about health. Okay, let's in talk about the health. So health may, again, chapter her number life. 4. Thank you That's for what the health that she I've. asked about actually. Sorry. हाँ बोलो प्रिया. Was I audible? I asked that whether I was audible. No, you were not. मेरा Your voice is नेटवर्क breaking शायद too कुछ much. I'll write down, ma'am. Priya, you are Actually, she breaking. has appeared for an exam for 5 times. And failed it. Okay. So is it something like a NEET Yeah, she exam or failed it. something Yeah. like a And school or a university exam? I think some UPSC exam sort of thing, ma'am. Yeah, so which is okay because your calling is not that. Your calling is not that. I cleared MBBS and then, but I went into studying nutrition. That was not my calling. My parents wanted to become a medical doctor. Okay. Everything was done. Everything was laid. But I didn't want to help people by giving medicines. I had to help people by the power of diet, nutrition, and lifestyle. That was my calling. So things were not happening right in that front. Eventually, what was my calling in life came to me. So आपकी calling UPSC की है ही नहीं. आपका बहुत बड़ा मिशन है जो यूनिवर्स ने आपके लिए फिक्स किया हुआ है. आपका पर्पस ऑफ लाइफ, आपका इकिगाई कुछ और है. तो वो आप एग्जाम के नहीं क्लियर कर रहे हो. कोई भी चीज जब होती है तो वो आप नहीं कर पाओगे ना. मतलब जो चीज आपकी कॉलिंग नहीं होती वो आप नहीं कर पाओगे. अगर आपको किसी बहुत बड़े पर्पस से आप पैदा हुए हो जो आपका इकिगाई है, आप ऑटोमेटिकली यूनिवर्स विल टेक यू देयर. हो सकता है आप 2 बार और अप्लाई करो तो तब भी नहीं होगा. इट्स नॉट कि आप डम्ब हो, है ना. अपने आप को थोड़ी लुक डाउन करना है दैट मेरी मेंटल स्टेट ऐसी नहीं है, मैं क्लियर ही नहीं कर पाती एग्जाम, ओ गॉड ये वो. It is not like that. There's so many things that are not happening right with us. That is only because universe is trying to communicate. Now that you are in the journey with us, you don't need to worry. Okay. So first affirmation you have to do is that I am successful in all areas of my life. Okay. This is something you need to keep auto repeat to yourself. जैसे tape recorder की तरह ना बार बार कहते हैं ना टेप रिकॉर्डर की तरह आप करते जा रहे हो. आई एम सक्सेसफुल इन ऑल एरियाज ऑफ माई लाइफ. द वर्ड आई एम इज द यूनिवर्सल वर्ड जिसपे ओम बेस्ड है, आमीन बेस्ड है. आई एम. ओके. ओम, आमीन, ओम, एमेन, ये सब आई एम होता है. आई एम मीन्स यूनिवर्स. सो आई एम सक्सेसफुल इन ऑल एरियाज ऑफ माई लाइफ. सबसे पहली चीज. ठीक है. दूसरा, शीशे के सामने बैठ के आप रोज 108 बार होपोनोपोनो कीजिए अपने लिए, अपनी जिंदगी के लिए. और तीसरी चीज हेल्थ के लिए, हम हेल्थ की बात कर रहे हैं. सो हेल्थ की बात अगर हम ये करते हैं तो हेल्थ में तो ऑलरेडी द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, राइट. और जो आपको हेल्थ पूरे टाइम जब आप पानी पी रहे हो, मैजिक इंग्रेडिएंट्स वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि आप जब ग्लास दोनों हाथ से पकड़ो, ठीक है, टेक अ डीप ब्रीथ जस्ट वंस. हाथ में आपका पानी का ग्लास है एंड जस्ट से थैंक यू फॉर माई रोबस्ट हेल्थ. And then you drink that water. You can drink it in sips, you can drink it constantly, whichever way. And at least 3 to 4 liters is how much we are drinking every day. So 3 to 4 liters is going inside that thank you for my perfect and robust health.
like that. Okay, so you will see that the energy of your body, the cells of your body will neurotransmit the signals, and you will see a huge improvement in your health. Okay, now comes about your career that you want to establish by giving your UPSC exam, जिसमें आप अपने आप को फंसावा महसूस कर रहे हो. So why do you want to crack UPSC exam? Because you want to make an administrative career and help people. So your goal in your dream list has to be thank you, thank you, thank you that I have an administrative career and a big platform where I can help people. And of course, like get the benefit of money also from there. That is what you need to ask. It is not about cracking UPSC. अगर आपको बहुत बड़ी administrative position चाहिए तो वो आपको वैसे भी मिल जाएगी, है ना? Because there are no wise. जो शार्प कंपनी के CEO हैं, संजीव क्या नाम है, वो तो BA पास हैं. उन्होंने कोई क्वालिफिकेशन नहीं, मतलब ऐसा है उनके पास कि वो, और अभी उनका प्राइवेट जेट है और वो एक खटरा स्कूटर पे ट्रैवल करते थे. लैम्ब्रेटा होता था बहुत जमाने पहले. आई डोंट नो, लाइक सम ऑफ यू हु आर ओल्डर वुड नो दैट लैम्ब्रेटा स्कूटर जो स्टार्ट भी नहीं होता था. तो उनकी मैं कहानी सुन रही थी तो वो यही बताते थे कि वो कहीं पे भी जाना होता था तो वो उस पर किक करते रहते थे. वहां से वो शार्प कंपनी के CEO बन गए. एंड Indian ruling over Japan, qualification was BA pass. Okay, so don't get into that to become a very, very big, popular, having a high post and earning a lot of money requires you to acquire a certain kind of a qualification. It doesn't work like that. Law of attraction says that your vibration, energy, and frequency will get you whatever your desire is. Okay, so you put this in your dream list and you work at it. So that is how, that you want a big administrative position, a very large platform to be able to serve others and receive the benefit of making a lot of money. That is what is your goal. Focus on that. Okay. Thank Yeah. you, ma'am. Lovely answer. Thank you so much. Thank you, ma'am. The next question is, property is not getting sold, has been doing gratitude for Mother Earth, gratitude for parents. She says even mother-in-law का भी किया है, अब क्या करूं? मतलब मैं तो क्वेश्चन नहीं समझी. So basically the property, the person whosoever has asked Oh, the the question, property, they want to okay. sell it. Yeah. अच्छा, तो प्रॉपर्टी सेल करना है. Yes. सो Yes, 5 ma'am. एलिमेंट्स का आप ऑलरेडी कर रहे हो. आप अपनी ड्रीम लिस्ट में डाल दो. आपको कितने अकाउंट में है तो इतना लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस प्रॉपर्टी सेलिंग का. बेटी जी आप हो कॉल पे? Yes, अभी ma'am. उन्होंने है मुझे बेटी जी. प्रॉपर्टी सेलिंग का दिया था. शी हैड गिवन मी द प्रॉपर्टी सेलिंग एफर्मेशन बिकॉज आई वांटेड टू गिव इट टू समवन हु वांट्स टू सेल द प्रॉपर्टी. ओके, सो बेटी जी ने मुझे Yes, ma'am. We'll repost it in the group then. हाँ, we'll repost it in the group. Just do that affirmation. वो डॉक्टर जोसेफ मर्फी की है. एंड उस प्रॉपर्टी को बहुत ज्यादा प्यार दो और विजुलाइज करो दैट रिसीविंग द अमाउंट ऑफ मनी इनटू योर अकाउंट, यू नो, दैट सीइंग दैट अमाउंट ऑफ मनी इनटू योर अकाउंट की प्रॉपर्टी इतने में सेल हो गई है, जो भी आपने अपना फिगर सेट किया हुआ है. So that is what. So it is visualization technique and it is also changing the attitude towards the property that जिसके पास भी वो प्रॉपर्टी जाएगी उसके घर में बिलियंस आएंगे और उसके घर में खुशियों की बारिश होगी. You know, it will rain happiness, it will rain wealth, happiness, prosperity and good health in that family, whosoever will be buying that property. Okay, that has to be a constant prayer. And so you can just continue doing that and do the affirmation that Dr. Joseph Murphy has given to us, which we had studied in the Power of the Subconscious Mind book when we had studied last May से लेके हमने उसको October, I think September तक की थी. So वो दे देंगे हम आपको दोबारा से. We had posted it, we'll repost it. हाँ जी. Sure. Thank you, ma'am. Next question is, मैम अच्छी कुक के लिए और क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं? प्लीज बताइए. अपने जितने भी आज तक चाहिए. डोमेस्टिक हेल्पर्स रहे हैं आप प्लीज उनके लिए ग्रेटिट्यूड लिखिए, जितने भी रहे हैं. और दैट इज इट. और आप रोज मतलब जो आपकी प्रेयर होती है उसमें, यू नो, इन द मॉर्निंग दैट थैंक यू दैट आई हैव एन अमेजिंग कुक. अब अच्छी कुक की डेफिनेशन क्या होती है पता नहीं, जो टेस्टी खाना बनाए. बट मेरा टेस्ट और प्रिया का टेस्ट अलग अलग है. मुझे मसाले और मिर्च बहुत ज्यादा पसंद है, प्रिया को बहुत ज्यादा मिर्ची ना पसंद होगी, है ना, उनको लगेगा मिर्ची बहुत ज्यादा है. आप मुझको ब्लैंड फूड दे दो मैं खा ही नहीं सकती. मुझे, मेरा टेस्ट ऐसा लाइक वेरी स्पाइसी फूड आई लव. और अगर जब ब्लैंड होता है फूड तो मैं हरी मिर्च अलग से खाती हूँ. सो माई टेस्ट ऑफ फूड इज गोइंग टू बी डिफरेंट. So there's nothing called a good cook, but yeah, someone who's sincere, honest,
and makes a nice tasty food is what you can actually put it. If it's not even a dreamless thing, it's not that sapna hai mera ki mere ghar mein ek aise cook hai. So I think that's lack of gratitude that you've had maybe for your past domestic helpers. You please give a lot of gratitude and blessings and send love to all the people who have been of help in your family all these years, and also in your office if you're a working person. Okay, and in the people who serve you. So I've given you that magic dust everyone practice to be done on a daily basis. I hope you're doing that. If you have been doing that on a daily basis, you would have already got an amazing cook by now. Okay, do that, because when we say thank you to all the people who serve us, because of who our life is easy, isn't it? While I was talking to you, I was seeing the woman in my house. She's cleaning, and then so diligently, because I'm sitting and talking, so she's cleaning, dusting everywhere around, and all of that. So these people make our life so easy. All the Myntra orders and our Nykaa orders that come, these people, when we really have, they'll say that magic dust to all these people, 10 people on a daily basis, there is no way that you will not have a string of people wanting to serve you in your life. Anna? And everything is always working out for me. This is what you have to rant and chant and write and think and talk and listen. Everything is always working out for me. So सब हो जाएगा, आपको बहुत अच्छी कुक मिलेगी. I'm sure आपके घर वालों को और आपको जिनका खाना बहुत पसंद आएगा. यही आपकी विश है ना, कि मुझे और मेरे घर वालों को उनका बना हुआ खाना बहुत पसंद आए. So yeah, go ahead, think like that. Give a lot of love. Do magic dust to everyone every day. Thank you, ma'am. Next question is, how can I overcome the challenge of health issues, AVN, hip joint collapse, and elbow surgeries, financial strain, and academic struggles to move forward in life? I think everything's coming from physical and mental health. All these things, whether it is the physical health is a manifestation of the mental health. The physical health cannot become right if the mental health is not good. Okay, so physical health is actually, it is all psychosomatic. तो इसीलिए आई थिंक फिजिकल मेंटल इमोशनल हेल्थ तीनों के लिए वर्क करना पड़ेगा ना, तो एवरीथिंग एकेडमिक भी ठीक हो जाएगा. बिकॉज जब तक माइंड में ब्लॉकेजेस हैं तब तक एनवायरमेंट में प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज आते रहेंगे. So let's focus on that first. जिसके लिए you have to go to the Magics and Miracles in Health chapter and also do Ho'oponopono for 15 minutes on a daily basis only for your health, by saying that I take 100% responsibility for whatever it is within me which is causing me to see this kind of a physical, mental, or emotional health. I'm really sorry for it. And thank you. I love you for cleaning that from my subconscious mind. Okay, that is what you need to do. And once you've done your 15 minutes of a thing for your own health, 15 minutes of Ho'oponopono, after that, give a beautiful sentence that thank you, universe, that I'm enjoying the best of physical, mental, and emotional health. And other than that, also do the water, the magic ingredient that hold the glass of water in your hand. Look at it. Okay, hold it with both your hands. Thank you for my robust health, physically, mentally, and emotionally. And then drink that water. And imagine 4 liters of water you're going to drink with that energy. And everything flowing into your palms, because your palms hold that energy, and you're holding the glass with that. And you will see the health revolution. So the physical, mental, and emotional health gets better. You will see the manifestation of that in your physical health, obviously, in your health. And you will see the outward circumstances change drastically. And that's how it works. Yeah. Sure. Thank you, ma'am. The next question is, I have been praying for a 4,000 square foot house. She lives in a joint family with her husband and married son. She has done vision board, 250 gratitude for house, but still it's taking time. I said it's Ma'am, okay if can't it's you- taking time. There's always a right time for everything, right? There's always a reason why things take time. If something is that means there is a little bit more polishing to be done. मैं आपको कितनी बार मैंने ये चीज समझाई कि अगर आप अभी -250 पे हो, है ना, और आपकी ड्रीम 250 फीट ऊपर है, सो उस ड्रीम पे अभी आप -250 पे हो, मे बी यू हैव कम टू -70 ऑलरेडी. सो नाउ यू हैव टू गो ओनली 70 feet up. Because of your practices that you have done, you've come from 250 to 70. Okay, now you only have to go from 70 to 50, 50 to 40, 40 to 30, 30 to 20, 20 to 10, and 10 to 1, and there is your dream waiting for you. So persevere.
बहुत जरूरी होता है पेशेंस एंड परसिवियरेंस, है ना, रिस्ट्रेंट, पेशेंस एंड परसिवियरेंस। ये मेरे गुरु ने मुझे पहले दिन कुछ कुछ चीजें जो मैं बता रही हूँ ना आपको, सो मुझे बिश्नोई जी ने मुझे पहले दिन ही जब मेरी योग शास्त्र की क्लास शुरू हुई थी तो मुझे ये चीजें समझाई थी, दैट बहुत जरूरी है जिंदगी में पेशेंस एंड परसिवियरेंस होना और रिस्ट्रेंट होना। रिस्ट्रेंट का मतलब होता है कुछ गलत चीज करने का मन कर रहा है, लेकिन आपको अपने आप को उसको रोकना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा दिस इज रॉन्ग एंड आई शुड नॉट बी डूइंग इट, बिकॉज ह्यूमन ब्रेन हैज गॉट द एबिलिटी टू चूज। Okay, so just continue. If you're doing your practices regularly, if you're already waking up every day or being regular with the YouTube, doesn't matter आप 6 बजे नहीं भी कर पा रहे हो because of whatever reasons, अगर आप regularly सारी practices कर रहे हो, अब सारी practices से मेरा मतलब है that there might be, maybe आपने property के लिए जितनी भी चीजें required है वो सब कर ली, कि आपको 4000 स्क्वायर फीट का घर खरीदना है तो आपने 5 elements के लिए थैंक यू किया, आप मैजिक डस्ट रोज कर रहे हो, आप रोज 9 planets के लिए थैंक यू बोल रहे हो, पेरेंट्स के लिए थैंक यू बोल रहे हो, ठीक है, ये सब कर रहे हो, बट हो सकता है आप अपनी हेल्थ को अब्यूज करते हो सकता है आप सेल्फ ब्लेम में हो सकता है आपने किसी को फॉरगिव नहीं किया है। जब तक आप उस पर्सन को माफ नहीं करोगे तब तक आपकी वो आप 4000 फीट का स्क्वायर फीट का घर नहीं खरीद पाओगे। दैट्स वेरी वेरी क्लियर। इसलिए मैं बोल रही हूँ सारी प्रैक्टिसेस, बिकॉज उसमें हम आपको फॉरगिव भी तो कराते हैं ना। हील माई रिलेशनशिप्स वाला चैप्टर अगर आपको याद है, so where we pick up that one person whom we have a grudge with, okay, and we write 10 blessings for that person, and other than that I've also told you that 5 minutes just sit and send love to that person, you know, send like the pink colored or red colored heart shape coming from your heart and going to the other person's heart. That means heart means subconscious mind, by the way, the soul. So from your soul there is a lot of red pink hearts. This is like an NLP technique, right? So you see that red hearts or whatever going to the other person's heart, जिससे आपको बहुत ज्यादा ग्रज है, जिसने आपको बहुत सताया है, दुख दिया है जिंदगी में, तो ये भी हो सकता है। तो अब क्योंकि इंडिविजुअली हम एड्रेस नहीं कर रहे, बट आप फिगर आउट करो दैट वेयर आर यू गोइंग रॉन्ग। आर यू इनटू द सेल्फ ब्लेम? आर यू होल्डिंग अ ग्रज अगेंस्ट समवन? You know, could be your in-laws, could be your brother-in-law, sister-in-law, or are you you know, like conjuice in the sense that you try and save money from here, save money from there, or are you into that blame game, or are you abusing your health, or you don't take care of your health, you don't have a good discipline system and structure in life, you don't save, you don't do what you say, है ना। So, हो सकता है कि कहीं पे तो कुछ ब्लॉकेज है, तभी तो अभी आप -70 पे ही हो ना, नहीं तो आप 1 पे पहुंच चुके होते हैं अभी तक। सो वो इसीलिए सारी प्रैक्टिसेस, जब ये 28 प्रैक्टिसेस जब हम करते हैं, हम रिपीटेडली करते हैं। कई लोगों को, मुझे प्रिया अभी बता रही थी कि बहुत लोगों को लगता है कि मैजिक बुक तो हर महीने करते हैं, हमको वो नहीं सुननी है, हमको दूसरी वाली किताब सुननी है। यू गॉन रॉन्ग देयर। मतलब उन्होंने, प्रिया से मैंने कुछ नहीं बोला उस दिन आगे, बट मुझे यही लग रहा था कि दिस इज द रीजन दैट दैट पर्सन जिसने ये बात प्रिया को बोली है कि मैजिक बुक तो हम हर महीने करते हैं, ठीक है, और ये इटसेल्फ मीन्स दैट मैजिक हैज नॉट वर्कड इन योर लाइफ। अगर कोई ये सोचता है, मुझे तो एक भी बार नहीं लगा कि मैजिक बुक हम दोबारा कर रहे हैं, बिलीव मी, I swear in the name of God, I'm looking forward to the next chapter of Magic Book on a daily basis, because I know there is a lot to be polished and a lot to be achieved and accomplished in life, and lot of negativities to be removed and cleaned up. Okay? अगर ये ख्याल भी आपके मन में आ रहा है दैट मैजिक बुक तो हम लगातार करते रहते हैं, इसका मतलब है मैजिक बुक ने अभी तक आप पे कोई असर नहीं डाला है, आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया है और आएगा भी नहीं, ठीक है, बिकॉज इट इज कॉल्ड एरोगेंस। अगर कोई बोलता है कि अरे सो जाओ मस्त रहो और यूट्यूब पे भी सुनने की क्या जरूरत है, मैजिक बुक वैसे ही किया हुआ है, आपको क्या पता मैंने उसमें क्या ऐसी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी थी जिससे आपकी जिंदगी पूरी तरह से, एक बहुत बड़ा दरवाजा जो आज तक बंद था आपकी जिंदगी का, वो खुल जाता, ठीक है, बिकॉज एवरी डे वी आर शेयरिंग अ डिफरेंट इन्फॉर्मेशन। प्रिया का आज सेशन बहुत अलग था जितना पिछली बार था और उससे पहली बार था। शी वॉज नॉट रेपिटेटिव एट ऑल। We try from our side that even if we do something 100 times, हमारा भी तो इंटेलेक्ट कितना एक्सपैंड हो रहा है, हम बहुत पढ़ते लिखते रहते हैं, 24/7 कुछ ना कुछ होता रहता है। अभी मैं आपको किताब दिखाऊंगी जो मैं पढ़ रही हूँ, उसकी वजह से तो मुझे लग रहा है कि यू नो इतना मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है मेरी जिंदगी में। आई वांट टू शेयर द बुक दैट आई एम रीडिंग, इट्स केप्ट ऑन माय बेड साइड, आई विल जस्ट टेल समवन टू गेट इट। ह्यूज डिफरेंस इट इज। सो अब मैं वहां से जो सीख रही हूँ तो मैं आपको बताऊंगी ना, because we are just channels. Kushal, can you just get that book which is there on my bedside? So that way, so we are huge channels, you know, so it is not magic book repeat होना। हम magic book में से कितना वहां के words लेते हैं, नहीं लेते ना,
मैजिक बुक नहीं तो 2 किताबें हम पढ़ रहे हैं और दोनों ही बहुत पावरफुल है। ये देखिए, दिस इज कॉल्ड बिकमिंग सुपर नेचुरल बाय डॉक्टर जो डिस्पेंजा इज व्हाट। सो आई नॉर्मली रीड 2 बुक्स एट वन टाइम, है ना, कभी बिकॉज ये थोड़ी हैवी लगती है तो मैं लाइट। और दूसरी किताब मैं ये वाली पढ़ रही हूँ, क्वेश्चंस यू ऑलवेज वांटेड टू आस्क बाय स्वामी मुकुंदनंदा। These are the 2 books that I'm reading right now. You think my magic book session is going to be same tomorrow after I've read 60 pages of this today? Okay, so if people are themselves feeling that, इसीलिए आप सारी प्रैक्टिसेस करो और करते जाओ। ये करने के अगर आपने 5 साल भी किया है ना, 5% इंप्रूवमेंट आ गया है अभी तक, 95% बचा हुआ है अभी भी। सोल लेवल की बात कर रही हूँ मैं, सोल लेवल पे, बिकॉज वी आर कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग, इवॉल्विंग एंड ऑल। व्हाई डू आई नीड टू WH में जाती हूँ एयरपोर्ट, आई लुक फॉरवर्ड टू गोइंग टू द एयरपोर्ट, गोइंग अर्ली ओनली टू गो टू WH Smith टू बाय दीज बुक्स। दिस इज द ओनली रीजन व्हाई आई गो अर्ली। कुछ नहीं करती, खाने पीने में कॉफी पी लो, ये कर लो, डोसा खा लो, मैगडी चला जाओ, उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं होता। मैं सीधे WH में जाती हूँ, वहां से मैं किताबों को ब्राउज करती हूँ और आधा घंटा वहां बिताती हूँ, और वो मेरे लिए ब्लिस होता है। क्यों करती हूँ? ताकि मैं आपको और अच्छा बता पाऊँ, है ना। तो इसलिए सारी प्रैक्टिसेस करो, बिकॉज हो सकता है कि प्रॉपर्टी इसलिए नहीं बिक रही है क्योंकि रिलेशनशिप में ग्रज है, हो सकता है कुछ मनी ब्लॉकेज हो सकता है, वो सब रिमूव होगा प्रैक्टिस कर करके कर करके कर करके। करते जाओ करते जाओ करते जाओ, चैलेंज योर लिमिट, एक्सपैंड योर horizons, look beyond and beyond. That is the only way you can grow in life, and you will see huge achievements coming to your life. ओके, सो करते रहो। अभी आप बिल्कुल ठीक जा रहे हो, अच्छा कर रहे हो, रोज सुबह उठ रहे हो। आई एम श्योर आप 6 से 7 कर ही रहे होगे। मदर अर्थ को कर रहे हो, पेरेंट्स के लिए कर रहे हो, इन लॉज के लिए भी करो। खूब प्यार दो अपने सास ससुर को, ठीक है। वो उनकी वजह से ही आपका परिवार है, आपका पति है, बच्चे हैं, या वाइफ है, या जो भी है। सो करते जाओ करते जाओ करते जाओ, खूब पॉलिशिंग करो, मजा आएगा। यही तो जर्नी होती है। फन इज इन द जर्नी, फन इज नॉट इन द डेस्टिनेशन। जिस दिन आप वो घर खरीद लोगे ना, उतने तब तक आप क्या इतने इवॉल्व हो जाओगे दैट you will want to be of service to others in your own specific way and while be blissfully happy. एक happy होता है और एक होता है blissfully happy. So like even if I've not achieved 100 crore in my account today, I'm blissfully happy. You know, this is what I've achieved in my journey, and that is how it is. And even if problems come, I'm not ranting around. I just sit back. I told you that I did 108 Ho'oponopono 11 times in a day. It was not easy. It was my work day. ओके, बट आई मैनेज टू डू इट। जब करना है तो करना है, जब अपना सोच लिया तो करना है, तो अपने ऊपर वर्क करने में लग जाओ और मस्त रहो, ठीक है। डांस द डांस ऑफ लाइफ, बिकॉज वी स्टडीड दैट यू आर द DJ ऑफ योर ओन डांस पार्टी। ओके, ऑलवेज टेक दैट कंट्रोल इन योर हैंड्स। हाँ जी, नेक्स्ट। श्योर मैम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दादी बनना चाहते हैं तो क्या प्रैक्टिस करूं, प्लीज सजेस्ट। यहाँ पे फ्री विल का क्वेश्चन आएगा तो मैं आंसर नहीं कर सकती, मुझे पता नहीं। अगर आप दादी बनना चाहती हैं और अगर आप के दोनों बच्चे, मतलब बहू बेटा, वो भी चाहते हैं, तो आप ये ड्रीम लिस्ट में डाल दीजिए दैट थैंक यू थैंक यू थैंक यू दैट आई एम ग्रैंड मदर ऑफ अ ब्यूटिफुल हैप्पी हेल्दी बेबी। ओके, एंड बिफोर गोइंग टू बेड इन द नाइट जस्ट विजुअलाइज। बट ये उल्टा इफेक्ट करेगा अगर वो लोग बच्चा नहीं चाहते तो, ठीक है। समथिंग विल बी टेकन अवे फ्रॉम योर लाइफ। So just be careful that you are doing exactly what the parents also who whether they want a baby or not. Anji. The next question is, for mirror practice and money manifestation, what should be our approach? Like, you are getting rich or I am getting rich? If in the mirror, then you are getting rich. Otherwise, I am getting rich. You know, like वो शाहरुख खान का वो गाना है ना, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, यू आर बेस्ट, तो उसमें आई एंड यू दोनों आया है ना। सो वो यू, अगर आप गाने को देखो तो वो उसी के लिए, आई एम द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। सो मिरर में देख के यू आर द बेस्ट, अदरवाइज आई एम द बेस्ट। ये तो फिट है, ये तो हिट है, यही गाने के लिरिक्स हैं, इफ आई रिमेम्बर राइट। यू नो, ये तो बहुत फिट है, ये तो बहुत, मतलब मैं अपने लिए मिरर में देखे, ये तो बड़ा हिट है, ये तो बड़ा फिट है, ही इज द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। ऐसे मिरर के सामने हो तो यू आर द बेस्ट, नहीं तो आई एम द बेस्ट, लाइक दैट। Sure, ma'am. Thank you. Ma'am, Avan, you'll have shall we to continue? just give me a Yeah, moment. sure.
Hanji, I think it's 12 already. Should we go ahead? Let's call it a day for now. Yes, ma'am. I was about many to ask questions are that. left? It's already done. Rest, ma'am, 3 questions are left, but we can answer it tomorrow in the session. Yeah. Like, Yeah. yeah. Okay, Thank you so because much, ma'am. also need the space for some other meeting right now. Of course, ma'am. Of course. Please go ahead, ma'am. Thank you so much, ma'am, for your time. And so each and much, every ma'am. answer was so much, Thank you so much, just ma'am. Thank Thank you. you, ma'am. Thank you so much. Bye bye. See you tomorrow morning at 6 Bye p.m. bye. Thank you. Bye Thank bye. you so much. Ma'am. Bye. ma'am. Have a Okay, great thank you day. so much. And Bye-bye. everyone who's asked, I will Thank surely you. pray. All of us will pray that all your dreams and desires get fulfilled.